Callus culture. As I told you earlier, that for plant genetic modification, a technique is required which is called as plant tissue culture, because there must be a means available by which we can in vitro propagate the plant cells, and a technique where we can artificially propagate plant tissue in the glassware on sterile artificial medium. This technique it is called as plant tissue culture. For example, we can take any part of the plant which is called as the explant, and then in vitro it can be propagated to produce new plantlets अंडर स्टीराइल कंडीशन कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अंडर स्टीराइल कंडीशंस जो हैं पैथोजन फ्री कंडीशन से या बैक्टीरियल फ्री कंडीशन में प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे हम नेचर में पौधों के कुछ बर्ड्स लेके उसको प्रोपेगेट करते हैं, तो अगर हमारे पास इसमें बर्ड्स ना भी हों, सिंगल सेल हो या लीफ का कोई हिस्सा हो, तो उसको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवा के प्रोपेगेट करवा सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। तो जो अर्लियर अटैम्प्ट्स की गई थी प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसमें ये टेक्निक जो थी ये एक बेसिक टेक्निक थी कि जब तक टिश्यू कल्चर जो है वो अप्लाई ना किया जाए उस वक्त तक ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं थी। ऑल्दो अब हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज भी आ गई हैं। सो विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर वी कैन develop unorganized or undifferentiated mass of plant cells, and this undifferentiated mass of cells that is produced under sterile conditions on culture medium, it is called as callus. And callus, it can be produced from any part of the plant, like from leaf, stems, or even from seeds. So variety of plant organs like roots, they can also be used for the callus production. तो callus जैसे मैंने बताया कि ये undifferentiated या unorganized mass of cells होते हैं और जिनको प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि वो किसी खास टिश्यू में डेवलप कर सकें। चूँकि ये इन विट्रो या अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस इनको बनाया जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट है ये माइक्रोबियल फ्री हो, पैथोजन फ्री हो, ताकि किसी तरह की कंटेमिनेशन जो है वो कल्चर मीडिया के ऊपर ना आए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कल्चर मीडिया जो है ये कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जिसको हम आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए या माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो जो प्लांट्स के लिए कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं ये माइक्रोब को भी फेवर करता है, तो इसलिए हम जो भी प्लांट का पार्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कैलस प्रोडक्शन के लिए, तो वो ज़रूरी है कि वो पैथोजन फ्री हो। तो फॉर दिस पर्पस वी कैन मेक द प्लांट पार्ट स्टीराइल बाय ट्रीटिंग इट विद sodium hypochlorite or ethanol or any other chemical agents that are favored for sterilization, and then they are incubated on the culture media for callus formation. And callus, they are mainly stored in dark because light can induce the chlorophyll formation. So this is a close-up view of a callus culture. As I told you that calli, they are mainly undifferentiated cells, or you may call it as an unorganized masses of cells. And those unorganized masses of cells, they can be programmed to develop into either root or shoot or any other part of plant. But for callus formation, we need artificial culture medium and a combination of phytohormones. It is very, very important. Phytohormones that are also commonly called as plant hormones, they are signal molecules, organic molecules that can coordinate with each other to control different developmental aspects of plant growth and development.
And most common classes, you may be well aware that they are five, although recently number of organic compounds have been reported that are having the activity of phytohormones. But the classical number is five, that included the most important types like the auxins, cytokinins, gibberellic acid, abscisic acid, and ethylene. A proper combination of these hormones can result in the development of callus formation from any part of the plant tissue. And here, the combination of cytokinin and auxins, they are most important one, because the low concentration of these hormones like cytokinins and auxins, they will trigger the formation of shoot, whereas their high concentration, it may lead to the development of, you can say that, the roots. In addition to that, gibberellic acid, it is also required for certain growth parameters, and abscisic acid, it can be used for the development of somatic embryo, or a process which is called as somatic embryogenesis.